रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। व्यक्तिगत अपराध के लिए सजा और आर्थिक दंड दोनों बढ़ाए गए हैं। परीक्षा संचालन में शामिल निजी एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर्स की जवाबदेही पहले से अधिक कठोर बनाई गई है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। यदि किसी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाते हैं तो वे भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही विशेष जांच दल, फास्ट ट्रैक अदालत और समयबद्ध अपील की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। परीक्षा में धांधली अब केवल किसी एक व्यक्ति की करतूत तक सीमित नहीं रह गई है। कई मामलों में पेपर लीक के पीछे संगठित नेटवर्क, तकनीकी संसाधन और आर्थिक लेन देन की पूरी चेन काम करती है। ऐसे संगठित परीक्षा अपराध के खिलाफ संशोधन विधेयक में सबसे कठोर प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स और समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था का प्रस्ताव है। यानी कि लक्ष्य सिर्फ एक आरोपी तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा माफिया नेटवर्क को कानून के दायरे में लाना है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है। इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करता है, परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करता है या परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, तो अब उसके लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे मामलों में 3 से 5 साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। संशोधन के बाद ये सजा बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष तक की जा सकती है, जबकि जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया गया है। सरकार का मानना है कि कठोर दंड संभावित अपराध के लिए
प्रभावी निवारक साबित होगा और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। आज अधिकांश सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में निजी एजेंसियों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी अब कहीं अधिक कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता था तथा संबंधित संस्था को 4 वर्षों तक सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता था। लेकिन अब जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और प्रतिबंध की अवधि भी 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष तक कर दी गई है। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन में शामिल प्रत्येक संस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन which was not less than 1 crore has been increased up to 10 crore. कानून तभी प्रभावी होता है जब कार्रवाई समय पर हो। परीक्षा अपराध में लंबी जांच और सालों तक चलने वाले मुकदमे न केवल न्याय में देरी करते हैं बल्कि बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज सार्वजनिक परीक्षा का संचालन केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा आयोजित कराने और तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने तक निजी एजेंसी की भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में किसी परीक्षा में गड़बड़ी होने पर सिर्फ व्यक्तिगत आरोपी को जिम्मेदार ठहराना काफी नहीं है और हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए मतलब साफ है, लापरवाही या मिली भगत की कीमत अब और भारी हो सकती है। संशोधन विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अब परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में केवल संस्था ही नहीं बल्कि उसके निर्णय लेने वाले अधिकारी भी सीधे जवाबदेह होंगे। यदि किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी, प्रश्न पत्र लीक में शामिल पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। संशोधन के बाद सजा बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष और जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक किया जा सकेगा। संगठित परीक्षा माफियाओं पर यह सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी
शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में ये सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक के पीछे संगठित आपराधिक नेटवर्क सक्रिय थे। ये गिरोह तकनीकी माध्यम, वित्तीय नेटवर्क और कई स्तर पर फैले संपर्क के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए संशोधन विधेयक में संगठित अपराध के लिए सबसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे मामलों में 5 से 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। अब न्यूनतम सजा 7 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम आर्थिक दंड बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, परीक्षा माफियाओं के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी और कड़ा प्रहार। संशोधन विधेयक में जांच प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है। जरूरी होने पर सरकार विशेष स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर सकेगी, जो पूरे मामले की जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब जांच अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। यह समय एफआईआर दर्ज होने, केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपे जाने या स्पेशल टास्क फोर्स के गठन जिस भी दिन से प्रक्रिया शुरू होगी उसी दिन से गिना जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि अपराधी जल्द कानून के दायरे में आए और न्यायिक प्रक्रिया में देरी ना हो। विशेष फास्ट ट्रैक अदालत। संशोधन विधेयक में पहली बार परीक्षा अपराध के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद एक सेशन कोर्ट को विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इन अदालतों में मामलों की दैनिक सुनवाई होगी और स्थगन से बचा जाएगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे को 3 महीने के भीतर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। पहले से लंबित मामलों की भी इन विशेष अदालतों में स्थानांतरित कर समयबद्ध रूप से निपटाया जा सकेगा। हाई कोर्ट में अपील की नई व्यवस्था। संशोधन विधेयक पहली बार परीक्षा अपराध से जुड़े मामलों में अपील की स्पष्ट और समयबद्ध व्यवस्था भी प्रदान करता है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सीधे संबंधित हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इस अपील की सुनवाई 2 न्यायाधीश की पीठ करेगी। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अपील का निस्तारण 3 महीने के भीतर किया जाए। सामान्यतः अपील 30 दिन के भीतर दायर करनी होगी। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 90 दिन तक की देरी स्वीकार की जा सकती है। जमानत से जुड़े आदेश के विरुद्ध भी अपील का अधिकार बरकरार रहेगा। विशेष स्थिति में 90 दिन तक की छूट। The Amendment Bill 2026 is in a way an extension of the 2024 Prevention of Unfair Means Bill, which is now an act. The earlier bill and the present amendment are the first of its kind in the history of independent India and directly inspired by the deep sense of sensitivity and concern that Prime Minister Modi ji has time and again expressed for the student and youth of this country. The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why
In the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and also announced the resolve of zero tolerance to paper leak. प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 केवल दंड बढ़ाने का कानून नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास है। कठोर सजा, अधिक आर्थिक दंड, विशेष जांच व्यवस्था, फास्ट ट्रैक अदालतें, विशेष लोक अभियोजक और स्पष्ट अपीलीय व्यवस्था, इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य एक ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें मेहनत और योग्यता को ही सफलता का आधार बनाया जा सके। एक मजबूत और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था न केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करती है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और देश की प्रतिभा पर विश्वास को सुदृढ़ करता है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026। एक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था किसी भी देश की प्रतिभा को सही अवसर देने की बुनियाद है। कानून में सख्ती जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी व्यवस्था जिसमें तकनीक, प्रशासनिक जवाबदेही और तेज न्याय तीनों मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में सामने आया है। अब इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि कानून के प्रावधान जमीन पर कितनी प्रभावी तरह से लागू होते हैं और क्या वे युवाओं के उस भरोसे को और मजबूत कर पाते हैं कि परीक्षा में सफलता का रास्ता केवल मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से ही होकर गुजरता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। देश को आजाद करवाने में बालकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छोटी सी उम्र के क्रांतिकारी बालक और अमर शहीद हेमू कालाणी भी इसमें शामिल हैं, जिनकी दास्तान लोगों तक पहुंचना अभी बाकी है। हेमू कालाणी का जन्म सिंध के सक्खर में 23 मार्च 1923 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम पेसुमल कालाणी और उनकी मां का नाम जेठीबाई था। हेमू बचपन से ही साहसी थे। हेमू कालाणी जब मात्र 7 वर्ष के थे तब वो तिरंगा लेकर बस्ती में अपने दोस्तों को अंग्रेजी शासन के विरोध में बात बताया करते थे। 1942 में 19 वर्षीय किशोर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ अपनी टोली को लेकर सिंध प्रदेश में क्रांति का बिगुल फूंक दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रियाकलापों में भाग लेना शुरू कर दिया। छापामार गतिविधियों और फिरंगी सरकार के वाहनों को जलाने में हेमू सदा अपने साथियों का हमेशा नेतृत्व करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होते ही देश के ज्यादातर नेता पकड़े जा चुके थे और ऐसे में छात्रों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सिंध के इलाके में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भेजने की योजना बनाई।
हेमू कालानी पढ़ाई लिखाई के अलावा अच्छा तैराक और अच्छा धावक भी था। अक्टूबर 1942 में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी और हथियारों से भरी ट्रेन उसके नगर से गुजरने वाली थी। हेमू को इसकी जानकारी मिली और अपने साथियों को साथ ले रेल की पटरियों की फिश प्लेट निकालने की योजना बनाई। पटरियों के नट बोल्ट खोलने के लिए कोई औजार उनके पास नहीं था, इसलिए लोहे की छड़ी से पटरियों को हटाना शुरू किया। आवाज सुनकर पुलिस का एक दस्ता तेजी से उनकी ओर दौड़ा। हेमू ने सब दोस्तों को भगा दिया, लेकिन खुद पकड़ा गया। हेमू कालानी को फांसी की सजा हुई। सिंध के गणमान्य लोगों ने वायसराय से उनको फांसी की सजा न देने की आखिरी इच्छा में हेमू ने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जताई। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय घोष करते हुए फांसी को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। हेमू का साहस सारे भारतवासियों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से न सिर्फ अपने राजनीतिक कौशल और लोकप्रियता को साबित किया है, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धि भारतीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ और जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार और विकास के नए आयाम देखे हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इस मामले में उन्होंने महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। We shall demonstrate that democracy is better and democracy is deliver. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि उनके लिए राष्ट्र ही प्रथम है। उन्होंने देशवासियों के सामने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा है और उस दिशा में वे लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो देश की दशा और दिशा को बताता है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार हर वर्ष योजनाबद्ध तरीके से लाल किले की प्राचीर से उन योजनाओं की घोषणा की जो आज नए भारत और विकसित भारत की नींव रख रही है। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत में भी उन्होंने देश के सामने प्राथमिकताएं रखी हैं, जिनमें भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप है।
प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी सरकार का फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्ष 2014, भाषण की अवधि 65 मिनट। मुख्य योजनाएं: हर घर शौचालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हर घर शौचालय योजना का ऐलान किया। 2014 से अब तक 12 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या बढ़कर 6,03,000 और जिलों की संख्या बढ़कर 706 हो गई है। खुले में शौच मुक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 35 है। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, the national song, followed by the national anthem and the Tamil Varthu.
विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த வெறும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. On behalf of the Central University of Tamil Nadu, I request the Honorable Chancellor, Padma Bhushan and Vigyan Ratna, Professor G. Padmanabhan, to declare the convocation open. I declare the 11th convocation of the Central University of Tamil Nadu open. Thank you, sir. On behalf of the Honorable Chancellor, I request the Honorable Vice Chancellor, Senior Professor Sulochana Shekhar, to welcome the gathering and present the progress report of the university. Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan avargal, Honorable Governor of Kerala and Tamil Nadu, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar avargal, Honorable Ministry of Parliament, Nagapattinam Constituency, Thiru V. Selvaraj avargal, Honorable Chancellor of the Central University of Tamil Nadu, Vigyan Ratna, Professor G. Padmanabhan avargal, members of the Court, Executive Council, Academic Council, Finance Committee and Building Committee, statutory officers, deans, heads of departments, distinguished members of the faculty and staff, district officials, police and security personnel and medical teams, our generous endowment donors and distinguished guests, proud parents and families, members of the press and media, and above all, my dear graduates. A very warm good morning to all of you. Today is a day of achievement, gratitude, transition, and above all, a day of hope. It is with immense pride and joy that I welcome you all to the 11th convocation of the Central University of Tamil Nadu. On this day, a total of 1,103 graduates are being conferred degrees across various multidisciplinary programs, including 50 gold medalists. Convocation is for more than the ceremonial receipt of a credential. It is the grand culmination of unyielding perseverance and a relentless pursuit of knowledge. As today one chapter closes, embrace the new possibilities and responsibilities. Honorable Vice President of India, Sir, it is our absolute pride and honor to welcome you, a distinguished son of the soil of Tamil Nadu. எங்கள் மண்ணின் மைந்தரே, உங்களை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது இந்த தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம். Sir, your journey in public service reflects a life devoted to the nation. Your service as a governor of Jharkhand with additional charge as a governor of Telangana
and the Lieutenant Governor of Puducherry and subsequently as Governor of Maharashtra reminds us that public life is a noble instrument of nation building. Sir, for our young graduates, your presence is an inspiration and a reminder that the highest purpose of achievement is to serve others and the nation. Sir, on behalf of the entire CU10 family, I extend to you a warm and heartfelt welcome. दीक्षांत समारोह में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत है। आपकी उपस्थित हम सभी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। Honorable Governor of Tamil Nadu and Kerala, sir, it is my great privilege to warmly welcome you. Your distinguished public service and commitment to constitutional values and the welfare of the people bring great dignity to this occasion. We are honored by your gracious presence and look forward to your inspiring words and blessings for our graduating students. I warmly welcome the Honorable Member of Parliament, Nagapattinam constituency, to this 11th convocation of our Central University of Tamil Nadu. Your gracious presence adds great significance to this memorable occasion. Honorable Chancellor of the Central University of Tamil Nadu, I extend a very warm welcome to you, sir. Your outstanding contributions to science and academic leadership is always inspiring. Your continued support is a source of strength and inspiration to our young university. Sir, we are deeply grateful for your presence and blessings. My sincere, heartfelt welcome goes to all members of our statutory bodies, endowment donors, faculty, officers, and non-teaching staff whose dedicated contributions continue to strengthen and advance CUTN. Universities are built not merely with buildings and classrooms, but with people, with teachers who inspire, staff who serve, parents who sacrifice, and students who dream. CUTN is a story of such collective dreams. From a single department with fewer than 10 students, CUTN has grown into a vibrant institution with 28 departments across 13 schools and 103 academic programs and over 5,000 students from across India. With students from Anandnag in Kashmir, Aralvai Moli from Kanyakumari, we represent the diverse language, culture and traditions we proudly call a mini India. I am pleased to state that University has secured 83rd position in the NIRF ranking and has remained as the India's top 100 universities for the 4 consecutive years. It has also earned an A+ grade in the NAAC second cycle from B++. CUTN currently has 34 active MOUs with academic and industry partners, creating opportunities for fellowships and employment. In keeping with the National Education Policy 2020, we have introduced the 4-year undergraduate program, Honours with Research, across 26 departments. And this year, we have also introduced 4 online postgraduate programs through the CUTN Center for Distance and Online Education. CUTN is leveraging AI and open source technologies to transform academics, administration, research, assessment, and student services. On par with global syllabus, CUTN has incorporated artificial intelligence in framing the curriculum of academic programs and research initiatives. Through responsible AI adoption, CUTN is advancing efficient, inclusive, and digitally empowered education. We have strengthened our digital governance through Samarth ERP and e-Office. Our commitment to research and innovation is equally strong. Our research impact has grown significantly with our Scopus H index reaching 92 and our patent portfolio expanding to 42. Support through DST Purse, DST FIST and other prestigious funding agencies together with our partnership with IIT Madras under ANRF is further strengthening our research excellence. Our infrastructure has also grown significantly. Academic and hostel facilities worth of 95.2 crores have been dedicated to the nation, providing accommodation for nearly 90% of our students. We gratefully acknowledge the Government of Tamil Nadu for its 6.36 crore contribution towards the Vettar Bridge, which connects our residential and academic campuses.
We are thankful to Ministry of Education and University of Grants Commission for sanctioning 385.27 crores as HEFA grant to further strengthen our infrastructure, including a new academic building, hostels for boys, girls and research scholars, a central scientific instrumentation facility with high-end equipments, and also expansion of the administrative building, faculty and staff quarters. But our progress is measured not only in buildings, patterns and numbers. It is also reflected in the villages we serve through Unnat Bharat Abhiyan, the opportunities we create for marginalized youth through Dr. Ambedkar Center for Excellence and SEED, and the training we give through our Center for Skill Development and our commitment to a greener campus. This is the CUTN VR building, an institution of knowledge, inclusion, innovation and social responsibility. Dear parents and families, today your children receive their degrees. Behind every degree lies a story of quiet sacrifices, postponed comforts, encouragement through difficult days, and an unwavering belief in their potentials and an unconditional love. As Thiruvalluvar reminds us, தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. அதாவது பிள்ளைகள் அறிவில் சிறந்து விளங்குவது பெற்றோருக்கு மட்டுமன்றி உலகில் வாழும் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி தருவதாகும். Today, as your children walk across this stage, we honor your dreams, sacrifices and faith in them. This movement belongs to you. On behalf of CUTN, I thank you for entrusting us with your children. We share your pride and joy in their achievements. My dear graduates, today you receive a degree. Remember what it represents: discipline, perseverance, and the courage to continue when the path was difficult. As you leave this university, you carry 4 values with you. Number 1, integrity. When the choice is between what is easy and what is right, choose what is right, especially when nobody is watching you. Number 2, curiosity. Your degree marks the completion of one stage of learning, not the end of the learning. Stay humble, stay curious, keep asking questions, and remain open to change. Number 3, compassion. Let education make you not only knowledgeable, but humane. Remember, those who have fewer opportunities, your education is a privilege and responsibility. 4th one is courage. As our Dr. Abdul Kalam fondly said, have a courage to think differently. Have a courage to discover the impossible. Have a courage to explore the path which was not explored. So, you will face failure, rejection, and uncertainty. Do not be afraid to fall. Fall, learn, rise, begin again. You may leave CUTN today, but whatever you do, wherever you go, CUTN will never leave you. Carry its values, memories, and the hopes of your families. Go into the world with the knowledge in your minds, compassion in your hearts, courage in your steps, and integrity in your lives. Make your families proud, make your university proud, but above all, make a difference. On behalf of the Central University of Tamil Nadu, I offer my heartfelt congratulations to every graduate, rank holders, and gold medalist. May your degrees open doors, your character earn trust, and your lives become a source of light to others. I wish you all success, fulfillment, and courage in the journey ahead. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, ma'am. I now request the Honorable Vice Chancellor in charge to felicitate our Chief Guest of the Day, the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. I request the Honorable Vice Chancellor in charge to felicitate the Honorable Governor of Tamil Nadu and Kerala, Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar.
I request the Honorable Vice Chancellor in charge to felicitate the Member of Parliament, Nagapattinam Constituency, Thiru V. Selvaraj. Thank you, ma'am. I invite the Honorable Governor of Tamil Nadu and Kerala, Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar, to address the gathering. Vanakkam. Most respected Honorable Vice President of our country, Thiru C.P. Radhakrishnan ji, Thiru Vishwanathan ji is not here, our Higher Education Minister, should have been here amongst all the students. Professor G. Padmanabhan, Chancellor of the Central University of Tamil Nadu, Professor Sulochana Shekhar, Vice Chancellor in charge of the Central University of Tamil Nadu, all other different heads of various departments, special guests, academicians, different faculty members, proud parents of the students of this convocation who are receiving the degrees, young graduates, my dear students, Sahodari, Sahodaramare, Namaskaram. This is the 11th convocation of this CTNU. The university itself has grown up to very high levels. If you go through the history of the university, central universities in this country have contributed a lot towards the development of the education, not in the form of only infrastructure of the educational institutions, but imparting what exactly requires by the society. The different courses which we see here in this university, that those itself will tell us how the university is addressing to the needs of the society. Because nowadays what we require is what society needs, what society wants, how the society should be guided and how the society should be given the education and thoughtfulness. That is exactly what our Central University here is doing. I am very happy that Central University has got different courses, and all these courses are directed towards the development of the students. Today we are having graduated students. I need not tell you that you are at the crossroads of the society or what is to be done by you people. We all here have gathered to listen to our Honorable Vice President, who himself has dedicated his life towards the development of the education and the society, who himself has been working very hard for these many years. I will not be here for much time, but what I want to tell you is, you must now try to understand why you have been graduated. What are you going to do next? Many a times if I ask any question to the children who will be carrying the graduated certificates with them, what are you going to next?
Many times it happens so that they don't have any canvas or they don't have any dreams before them. They don't know what is to be done. You will have to decide it today, my dear friends. If you decide it today, the future will be yours. Don't wait for tomorrow's decision. Decide it today. And you are the people, you are the students, you are the young pillars of our country who are very much disciplined. You have the discipline within you. Nowadays there is a trend telling and cursing our youth power, youth children, young generation. No, they are not disciplined, they are doing whatever they want and this. But if I see here the gathering of our students who are very much disciplined, can anybody point fingers at you? You are disciplined. You are destined to do something for this country and society. That is what you will have to take from here. That is why the education is very much important. It creates within us what we should be after few years. After few years, not only we means not myself, we means my society, my country, my state. Prime Minister of India has put before us exactly after 20 years from now, we will be a developed country, Vikasit Bharat. What will be my contribution towards Vikasit Bharat? That has to be decided, my dear friends. I only would like to say that whatever you are going to be afterwards, you have to contribute towards the development of the society and that of my country. That is the Vikasit Bharat. Because your name will be there after 20 years. Decide it today. You cannot wait for tomorrow. Decide what you are going to do. I do not know, but I am really have expectations from all the vice chancellors and the faculty members of the university that we will have to train our students to go for some entrepreneurship, some development in entrepreneurs. Entrepreneurs development cell has to be established so that our all students, they will be developing them within themselves a sense of doing something. Our government of India and government of Tamil Nadu also, they all are trying hard to give you the help, all the assistance to have startups. That is what we have to decide, my dear friends. All that I can say is congratulations to you, all of you. Remember your parents who have been very tiringly doing some efforts to get this day. Don't forget your parents. Don't forget your teachers. They have been here doing everything for you. That's all I have to say. Namaskaram, Vanakkam, Nandri. Thank you, sir. Convocation address. Honorable Vice President of India, I invite you to address the gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் மனிதனமும் வழிபடுகின்ற சர்வ சக்தியையும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் 11வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்து மேடையிலே என்னோடு அமர்ந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர்களும் அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை நான் முதலிலே உரித்தாக்குகிறேன். இன்றைக்கு மேடையிலே எனக்கு முன்னாலே நம்முடைய இளைய தலைமுறையினருக்கு
மிக அற்புதமாக ஒரு ஒரே ஆட்டி அமர்ந்திருக்கின்ற தமிழகம் மற்றும் கேரளத்தினுடைய மேதகு ஆளுநர் ஸ்ரீமான் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேக்கர் ஜி அவர்களே, நம்முடைய நாகப்பட்டினம் மக்களவையினுடைய உறுப்பினர் பாசத்திற்கினிய அருமை சகோதரர் திரு செல்வராஜ் அவர்களே, தி சான்சலர் ஆஃப் அவர் யூனிவர்சிட்டி श्रीमान प्रोफेसर जी बत्मनाभन जी அவர்களே, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी सीनियर प्रोफेसर சுலோச்சனா சேகர் ஜி அவர்களே, இங்கே வருகை புரிந்து அமர்ந்திருக்கின்ற வேளாங்குறிச்சி ஆதீனம் பூஜனிய சாமிஜி அவர்களே, பெற்றோர்களே, அறிஞர் பெருமக்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, நாளைய நல்லுலகத்தில் இந்தியாவை உலகின் உச்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு இன்றைக்கு பட்டமளிப்பு விழாவிலே பட்டங்களை பெறுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமை மாணவ கண்மணிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எழுகின்ற முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கி, it gives me immense pleasure to be with you all for the 11th convocation of the Central University of Tamil Nadu. Today is the memorable milestone in the life of this university and more importantly in the lives of the young graduates who assembled here to get their degrees. We gather to celebrate the transformative power of education, the pursuit of knowledge and the dedication, perseverance and resilience that have brought each one of you to this significant moment of your life. My heartiest congratulations to every graduate who is going to receive the degree today. This achievement belongs not only to you, but belongs to your parents who have dedicated their scarce resources on you, who always dream on you, who always for the welfare of you, who always want, pray that you should be successful in your life. And also the teachers, mentors and well-wishers, all faculty members, teaching and non-teaching staff of our university, whose encouragement and sacrifice made this day possible, and their role in shaping you is commendable, and we all appreciate their selfless efforts. I am especially delighted to be back in Tamil Nadu, a land renowned for its rich cultural heritage, timeless traditions, and extraordinary contributions to learning, literature, science, music, technology, and civilization. For me, this homecoming is deeply personal, for Tamil Nadu is the soil where I was born and where all my journey has begun. The location of this distinguished university in the sacred land of Tiruvallur is especially more significant. Home to the magnificent Tyagaraja. This holy land reminds us that true greatness is born when culture, learning, and values flourish together. Tiruvallur's rich legacy of learning, public service, and devotion continues to inspire generations of future leaders and intellectuals. My dear students, you are graduate at a time when the world is changing at a fast pace. What it was a year back now becomes irrelevant. The technology is changing.
The change in technology is unimaginable. What is very important 2 years before now becomes outdated. And you have to adapt yourself to the fast-changing situation, whether it is artificial intelligence or any other new technology which is going to emerge. We don't know what is going to emerge. And you have to equip yourself. For that you have to continue your education even after the graduation. You should never stop your education. That is where you are going to be more successful in the future. In such a rapidly changing world, knowledge alone is no longer sufficient. The greatest strength will belong to those who continue learning throughout their life, adapt confidently to change, embrace the innovation, and work collaboratively to solve complex problems. It is nothing very tough. When we start practicing everything every day, that becomes so easy. You should not give a gap. If you give a gap, then you will be left out somewhere. The future will belong to those who can apply knowledge with wisdom, creativity, and integrity. Higher education has witnessed a tremendous expansion in the last 12 years due to the visionary efforts of our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji. You just imagine how much changes have come in. Since 2014, 16 Indian Institute of Information Technology has been newly established. 8 central universities, 8 Indian Institute of Management, 7 Indian Institute of Technology, 2 Indian Institute of Science Education and Research, 1 National Institute of Technology, and above 12 new aims have been established. Not one. 12 new aims have been established. How this is possible? When you go to a place, you have to see the agony of the people. When you register the agony of the people in your mind, when you get a chance to serve, your priority will come to your mind. That is what happened with our Narendra Modi ji. He has visited many times aims where the patients and the patients' relatives have no facilities. Even the common civic facilities were not there. So he has seen the crowd. So instead of having one aims, bringing the patients to Delhi, AIIMS should travel to the entire country. That's why we are having 12 new AIIMS today. That is the answer of our Narendra Modi to me when I asked him why you are going for many AIIMS. Bharat today have more than 1,425 universities, 54,000 colleges, and 16,850 standalone institutions. Why this big reform has come in the field of education? Education is the only tool with which we can eradicate poverty. We are not only eradicating the foolishness of the society, by educating the society, we are equipping them to earn for themselves, and the poverty will get eradicated. So education is the best tool to open the gates for development. There has also been significant increase in women's enrollment in higher education, that is from 1.57 crore in 2014 to 2015,
to increase to 2.24 crore in 2023-24, which is a massive 42.2% increase since 2014-15. We are always talking about women's empowerment. Women's empowerment cannot come unless the women get higher education. Whenever I go, I find more number of women getting degrees and medals compared to men. That is not only here. I went to the Kashmir University. There also, more Muslim women has won the gold medals. Education today is no longer measured only by the examinations or the marks. It is measured by the ability to think independently, communicate effectively, work with others. That is more important. You should always have a team spirit. Nobody can be so successful in isolation. You have to live in the society, you have to work in a team, and the team success is your success. Yes, there will be some problems. Yes, there will be some hurdles. Yes, there will be some pains. Sometimes it can create big agony also. But who can bear those agony and come out of it and work together, they are the most successful leaders that the world has ever produced. This is precisely the spirit of the National Education Policy 2020. In the recently concluded session of the Parliament, the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill was passed. The same bill was passed when I was the governor of Jharkhand. That bill was passed by the Jharkhand state government. Many people advised me not to sign that bill to become the law. But without any hesitation, when the bill come to my table, the very second I signed that bill to become the law, because you always keep one thing in mind: unless the bad elements of the society get punished, nobody can protect the interest of the good people. The university's achievements, I compliment the Vice Chancellors, faculty, members and officers, staff and every stakeholder of this university for creating an environment that encourages excellence. The university's achievements, including securing the 83rd rank in the NIRF rankings 2025 and earning the prestigious NAC A+ accreditation, reflects its growing academic stature and commitment to the quality. If you continue your good work, I think you will get A++ also. That you will definitely get. I am equally pleased to note that the university has secured over, that was already said by our Vice Chancellor, 385 crore for one single university. I remember when I was in the school, Malcolm Adisesaya was the Vice Chancellor of that time Madras University, now Chennai University. He said, there is no money in the university to buy furniture. Those who are the backbone for you today, including our Chancellor, we all educated in the most hostile atmosphere. I remember my school, a government school.
All the three sides it is open. What about the fourth side? Fourth side is another classroom. When the rain comes, water will come inside. So there will be a divider between this classroom and this other classroom. So on that platform we have to put all our books. So we all get educated like that. I am not saying that you also should get educated like that, but what I am saying is you are in a better position today to have such a nice auditorium today. So your responsibility is more. I remember Dr. Radhakrishnan was the President of India, in whose birthday we are celebrating as Teachers' Day. He has studied under the street lamp. So, yes, it was very clearly mentioned by our Vice Chancellor, no building can bring results. But building is required for a comfortable atmosphere. Why we need a comfortable atmosphere? To grasp more, to teach more. By grasping more, you become more intelligent. Your talents are getting retuned. Your talents are getting more sharpened. Why you need world-class research laboratory? So that you will be able to compete with the other countries. That is what we want. We should be never at the receiving end anymore. The entire young youth brigade should be ready to deliver big, great innovations for the humanity. That is where the real success is there. Modi ji is talking about 2047, Viksit Bharat. Yeah, Viksit Bharat should be always an inclusive development. No sections of the society should be left out. We should take everybody together so that the benefit of the development should reach every family, so that every family will have good health care, good house to live, of all seasons, good education, good food to eat, good dresses to wear. And we should provide the best public transport system so that people can move from one place to the other at the most competitive cost. That is what is Viksit Bharat we are aiming at. This big investment will strengthen the teaching, research, innovations and create a future-ready campus capable of nurturing generations of young scholars. Dear graduates, today you are going to leave your classrooms, but you should never leave learning behind. That's what I repeatedly telling. Because it's not like our days. The syllabus never get changed for 10 years also. I will just tell you one simple example. We used when I was very young, like me, all the students used to go to one typewriting institute to learn typewriting. That time Halda, Remington are the biggest companies of India. Today where are they? Where are the typewriting institutions? So what I am trying to say is the world has changed so much. Nothing is permanent except, as we all say, the only constant factor in the world is change. You have to always equip yourself. You adapt yourself every day, and you have to watch carefully the modern changes, scientific changes coming up in the globally every day. I firmly believe
that the future of India will be written in classrooms and laboratories and hospitals and farm startups and the industries, villages and the cities by the young people like you. We have to adopt modern scientific method everywhere. Our police officer is sitting here, you ask him how the crime was taking place 10 years before, 20 years before, and how the criminals are so equipped than our police system sometimes. But still, our police system is one which is highly dedicated. If they want to catch the culprit, nobody can stop, they will catch them. So we have to adapt ourselves to the changes. That is very important. And I am having the highest confidence on all of you that Viksit Bharat by 2047 is not going to be a dream, but it is going to be a reality. Wherever I go, I always ask two things. Living for yourself is not a sin. But what is the sin? Living only for yourself is a sin. While living for yourself, you should live for others also. A person like me, leaders like me, we should not live for ourselves, we should live for only the society. But as a student, as an young man, you should take care of your family, your parents, after that your own family, after that your own children. At the same time, you should also contribute for the welfare of the society, because we take everything from the society. This 385 crore, from where it has come to our university? This is coming from the poorest man who is paying the GST. If he buys one matchbox, he is paying. He buys one shirt, he is paying. So it is the contribution of the society that has come to our university, and we take it from the society. So we have to contribute to the society all the time. In every action of you, you should always keep nation first. We should not politicalize everything. But unfortunately, in Tamil Nadu, everything is getting politicalized. They are saying, why Tamil Thai Valtu is not singer the first? They are saying it is an insult. That means, can you insult the national song? I will tell you the one single slogan that enables us to be a free country today, that is Vande Mataram. In Tamil Nadu also, V.O. Chidambaram Pillai, Subramani Siva, they walked village to village. With one single sentence, Vande Mataram, they stimulated the spirit of the people fighting against the British colonial Raj. Who said if it is sing at the third place, then it is being insulted? There are so many leaders. Chief Minister is there, and former Chief Ministers, 3 former Chief Ministers are there in our state. Are they speaking at last, or are they speaking in the beginning? Why don't they speak at the last? Because they feel that is a respect for the leader. So when you speak as the last speaker, that is paying you the respect.
when the Tamil song, Tamil Thai Valtu has been sung as the third one, are we going to insult Tamil? Can anybody insult their mother?